Thank you for joining my class and I am BL Sharma. Yes, मैं BL Sharma maths हूँ. In this video, I will be discussing with you class 10th some important multiple choice questions, very useful for the coming exam. And that is also useful for the basic and standard, both the students who have opted both basic and standard mathematics. इस पूरे वीडियो में 20 MCQs होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs होंगे और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग MCQs भी इसमें होने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. So we begin with the question number 1 now, and question number 1 is now on your screen. If A and B are two numbers, A is given, B is given, and then what is the SCF of the two numbers A and B? देखिए यहाँ पे for the SCF we have to take the for the SCF of A and B, we write the smallest power of 2, the power of 2 is 2 here, और यहाँ पे the power 2 का 30 है, और इसका जो स्मॉलेस्ट पावर है वो है 2 power 2. Similarly for the 3, the power of 3 is 30, the power of 3 is 2, so smallest is 2, so 3 power 2, and smallest power of 5 is 1, it is 5 power 50, 5 power 1, so smallest power of 5 is 1, and here 7 is not there, so 7 cannot be the common factor here. So 2 power 2, that is 4, 3 is 9, 5, so that is means 36 into 5, that is 180. So therefore B is the correct option. So the SCF of A and B in this question will be 180. If 1 0 of the given polynomial is negative, the zeros are negative to each other, then the value of k is. हमें पता है कि देखिए अगर a sum of zeros that we know that is minus b upon a, means minus coefficient of x upon coefficient of x square here. So एक जीरो हमने प्लस अल्फा लिया, दूसरा इसका नेगेटिव हो गया because it is given that the both zeros are negative of each other, and here minus as it is, the coefficient of x, that is k plus 5 here. The coefficient of x is k plus 5, and the coefficient of x square is minus 8. So divide by minus 8. Plus alpha and minus alpha, that is cancel out. So 0 is equal to minus. We can write minus plus. So plus k plus 5 upon 8. So 0 into 8 on cross multiplication, that is k plus 5. So 0 is equal to k plus 5. That is the value of k is minus 5, because 8 into 0, that is 0. So k plus 5 is equal to 0. So k is minus 5. So therefore A is the correct option here. That is minus 5. If 29x plus 37y is equal to 103 and 37x plus 29y is equal to 95, then solve it and get the value of x and y. देखिए दोनों का अगर ऐड करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे
देखिए 29 और 37x है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए। तो ऐड करने पे देखिए 29x प्लस 37y that is 103 and 37x plus 29y that is 95। इन दोनों को ऐड करेंगे तो दैट इज 66x प्लस 66y दैट इज 198। 66 आप कॉमन लीजिए, सो दैट इज x प्लस y दैट इज 198। सो x plus y is equal to 198 upon 66 that is 3। सो एक इक्वेशन आपका जो नेक्स्ट इक्वेशन बना है सिंप्लीफाई करने के बाद दैट इज x plus y is equal to 3। इन सेकेंड केस व्हाट वी डू, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करिए। सो वी कैन टेक 37x plus 29y is equal to 95 and 29x plus 37y is equal to 102। So we have to subtract। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज करिए, साइन चेंज करिए तो देखिए दैट विल बी 37 minus 29 that is minus that is 8x 29 sorry plus 8x 29 minus 37y that is minus 8y and 95 minus 103 that is minus 103 sorry that is 8। that is minus 8। Taking 8 common, that is x minus y, that is minus 8। So x minus y is minus 8 upon 8। So x minus y is equal to minus 1। इस इक्वेशन को थर्ड मान लीजिए और दिस इक्वेशन इज फोर्थ। Now further simplification of now solving third and fourth। Equation number 3 and 4th, we have x is equal to 1 and y is equal to 2। इन दोनों को सोल्व करिए, दोनों को ऐड करिए। x plus y is equal to 3, x minus y is equal to minus 1। इन दोनों को जैसा सोल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो x is equal to 1 and y is equal to 2। So therefore A is the correct option। Let P be a prime number. The quadratic equation here having its root as factor of P is, देखिए रूट्स द फैक्टर ऑफ पी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिखके बताता हूँ यहाँ पे कि इसका इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा। देखिए सी हियर, देखिए हियर यू कैन टेक एन एग्जांपल 3। देखिए 3 इज अ प्राइम नंबर। वी कैन टेक एग्जांपल 3 प्राइम नंबर है तो एक तो इसका फैक्टर 1 है और एक द नंबर इटसेल्फ है। यू कैन टेक द प्राइम नंबर 2। one factor is 1, other factor is 2, the number itself। if you are taking prime number 1 p, so one factor is 1 and other is the number itself। so question में it is given in the question let p be a prime number और जो इसके रूट्स हैं वो रूट्स इसके कौन कौन से होंगे, एक तो होगा p और एक होगा 1। so we can write here therefore we have the equation x square minus sum of roots into x plus
products of root that is equal to 0. It is similarly to the quadratic polynomial. ये quadratic polynomial का भी equation हो सकता है. तो देखिए x square minus as it is. Sum of roots means p plus 1 into x plus product of root is p into 1 that is equal to 0. So x square minus p plus 1x plus p that equal to 0. That is equal to 0. 1 आप इसका रूट 1 लीजिए और अदर रूट इसका p ले लीजिएगा. तो p plus 1 here, so x square minus p plus 1x plus p. So I think it means the B is the correct option. If k 2k minus 1 and 2k plus 1 are three consecutive terms of an AP, एक continuous जो three terms है वो AP की है, then find the value of k. देखिए क्या है कि it means the common difference should be same. So common difference second term minus first term should be equal to third term minus second term. देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म लीजिए और इसका थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म तो लिया हमने. सो कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम. सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन 2k minus 1 minus k open the bracket 2k plus 1 minus 2k minus 1, this 2k cancel and 2k minus that is k minus 1 is equal to that is sorry, this is plus sign, so that is 1 plus 1, so k is equal to 1 plus 1 plus 1, so k is equal to 3. Therefore the value of k will be 3. B is the correct option. I think you are getting my point. ABCD is a trapezium with the lines AD is parallel to BC. This line AD is parallel to BC. It is given. And AD is 4 centimeter. This AD is 4 centimeter. The diagonal AC and BD intersect at the point O, and AO upon OC is equal to OD upon BO. It is given DO upon BO. Then we know that this angle will be equal to this angle, alternate angles. This angle will be equal to this angle, alternate angles. Therefore, triangle AOD is similar to triangle COB. And we know by angle property, and we know therefore the ratio of the corresponding sides will be equal to the ratio of corresponding sides of similar triangles are equal. So AO upon OC is equal to AD upon BC. AO upon OC is given 1 by 2, that is AD upon BC. So BC is equal to twice of AD, and AD is given 4 centimeters. So BC will be 4 to the 8 centimeter. So the length of BC here will be 8 centimeter. पहले दो ट्राइंगल्स को सिमिलर हम प्रूव करेंगे. हमें पहले से रिजल्ट ही पता होना चाहिए अगर MCQ है तो, और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पहले वी हैव टू प्रूव द टू ट्राइंगल्स सिमिलर. और जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है. दैट इज व्हाई BC विल बी 8 centimeter here. So B is the correct option. The point P means A by 3, 4 is the midpoint of the line segment joining -6, 5 and R -2, 3. तो पहले हम चाहें तो एक बना लें. इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बस जरूरत नहीं है अगर आपको पहले से पता है. लेटर दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R, and this point is P, that is -6, 5, coordinates of R, that is -2, 3, and coordinate of P, that is A by 2, 3.
Using midpoint theorem, we know that x is equal to x1 plus x2 by 2. यहाँ पे जो x है वो a by 2 है, a by 2. So -6 -2 by 2, 2 and 2 cancel. The value of a will be, sorry, this is a by 3. I have to change it again. मैं इसको दोबारा से करूंगा. देखिए मिड पॉइंट से a by 2 will be equal to -6 minus this is again I am writing here, this is a by 3, this is a by 3, that is 2. So a is equal to 3 into -8 by 2, so that is 3 into that is -4, so that is -12. Therefore, the value of a will be -12 and b is the correct option. If cos theta is 1 by 2 and sin phi is 1 by 2, then the value of sin theta plus phi minus cos theta plus phi is, we know that it is given cos theta is 1 by 2, cos theta is equal to cos 60. So theta is equal to 60 because cos 60 is 1 by 2, number 1. And it is again given sin phi is 1 by 2. Sin phi cosine 30 is 5 by 2. That is why phi is equal to 30. तो थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, फाई का जो वैल्यू हो गया वो 30 डिग्री. नाउ ये वैल्यू हम पुट करेंगे. देयरफॉर नाउ sin थीटा प्लस फाई माइनस cos थीटा प्लस फाई. देखिए थीटा प्लस 5 60 प्लस 30 minus cos 60 plus 30. So that is sin 90 degree minus cos 90 degree. We know sin 90 degree is 1 and cos 90 degree is equal to 0. So that is 1 minus 0 is equal to 0. Therefore, B is the correct option. A lamp post that is 5√3 meter casts a shadow 5 meter long. ये देखिए जो लैम्प पोस्ट है उसका हाइट है 5√3 मीटर. ये इसका शैडो है that is 5 meter and we have to find out the sun's altitude, means this angle is to be required. You can write here, means you can say this angle or this angle, that is one and the same thing. ये एंगल कितने डिग्री का होगा आपको देखना बताना है. तो देखिए यहाँ पे in the right angle triangle we know that AB tan theta is equal to AB upon BC. ये हमने जो सन्स एल्टीट्यूड आप ये ले सकते हो, ये इसका ये भी अल्टरनेट एंगल्स होता है, दोनों ही एंगल सेम होते हैं. तो AB is 5√3 upon 5, 5 and 5 cancel, so that is √3. And we know the √3 is the value of tan 60 degree. Therefore, theta is equal to 60 degrees. So sun's altitude will be, it will be 60 degrees. C is the correct option. Sin A minus B, that is 1 by 2. So we can say it is given sin A minus B is 1 by 2. Sin
A minus B, 1 by 2 is the value of sine 30 degree. Therefore, A minus B is 30. This is equation number 1. Similarly, it is also given that cos A plus B is 1 by 2, but cos 60 is 1 by 2. Therefore, A plus B is 60. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ. अब देखिए, you can mark here equation number 1 और you can mark here equation number 2. अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से. नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, A माइनस बी 30, दिस इज फर्स्ट था, और A प्लस बी दैट इज 60, ये सेकेंड था. इन दोनों को आप ऐड करिए. ऐड करने से देखिए, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडिंग देन प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो A and A to A is equal to 90. So A is equal to 90 by 2, that is 45 degree. And we know that A plus B 60 degree, A 45 का है तो B 15 degree का होगा. Therefore B is 15 degree. यहाँ पुट करिए वैल्यू की 45 plus B 60, so B will be 15 degree. So A is 45 degree and B is 15, and therefore B is the correct option. कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं. The radius of the circle is R and this angle is theta. Then the ratio of area of sector and length of corresponding arc is, we know area of sector is given by, that is pi r square theta upon 360. And this length of arc is given by pi r theta upon 180. ये आपके फॉर्मूलाज हैं क्वेश्चन में, चैप्टर में. लेंथ ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जहां पे आर रेडियस है और जो एंगल एट द सेंटर इज थीटा डिग्री. तो देखिए, हमें दे रखा है कि हम इसको बनाते हैं पाई आर थीटा इंटू आर, दैट इज 182. देखिए, इन प्लेस ऑफ पाई पाई आर एज इट इज, दिस आर स्क्वायर यहाँ पे था तो एक आर हमने यहां लिया, थीटा एज इट इज, 360 को हमने स्प्लिट किया 180 इंटू 2. बट नाउ यू कैन से दैट दिस पाई आर स्क्वायर थीटा दैट इज ऑल्सो लेंथ ऑफ आर्क. सो दिस फॉर्मूला को हम फिर से लिखेंगे, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क LR by 2, because in place of pi r theta upon 180 you can write length of arc. So area is equal to LR upon 2. Area of sector is given by LR upon 2. ये रिलेशन होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस बाय 2. अब क्वेश्चन में ये पूछा है, क्वेश्चन में ये है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग आर्क. सो देयरफॉर वी कैन से दैट लेंथ एरिया अपॉन लेंथ ऑफ आर्क दैट इज A, दैट इज R by 2. आर एल को आप यहां पे लाएंगे. सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम? देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन देम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल is given by length of arc of a circle is given by R by 2, or this is the relation, area of sector of a circle is given by L R upon 2. A stands for area of sector, L stands for length of arc of the corresponding sector, R stands for radius. So what is the answer here? Area of sector upon length of arc, that the ratio is given by R by 2. So B is the
करेक्ट ऑप्शन हियर। इस रिलेशन को आप बिल्कुल याद रखिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर इज लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस बाई 2। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। द नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1/2 सेंटीमीटर, ये एक दैट कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखिए ये स्पेयर है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और हमें ऐसे ऐसे स्पेरिकल मीन्स बॉल्स बनाने हैं जिनका रेडियस हाफ सेंटीमीटर हो। कितने बनेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ spherical balls is equal to volume of the bigger means 4 by 3 pi r cube upon 4 upon 3 pi r cube. That is volume of the larger sphere divided by volume of the small इसमें smaller sphere जो जिससे बनाना है उसका इसका वॉल्यूम ऊपर रखिए। The volume of a sphere is given by 4/3 into pi r cube. देखिए 4/3 पाई इज कैंसिल बाई 4/3 पाई, सो वी कैन राइट आर क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर क्यू, दैट इज 4 power 3 divided by 1/2 power 3. So can you get the answer here? Can you calculate? देखिए कैलकुलेशन में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। दैट इज 4 into 4 into 4, दैट इज 64 divided by 1 divide into 8, 1/2 into 1/2 into 1/2, that is 1/8. So 64 into 8 upon 1. So 64 into 8, that is 512. So 512 means this small spherical ball can be made from the sphere of radius 4 centimeters. The area of minor segment made by a chord which subtends right angle at the center. देखिए ये जो chord है ये center पे 90 डिग्री एंगल subtend करती है और जो radius of the circle है that is given 10 centimeter. And now we have to calculate the area of the minor segment. This red shaded portion का area हमें find out करना है। हमें पता है the area of a segment of a circle is given by pi r square theta upon 360 minus 1 upon 2 r square sin theta. जब ये एंगल 90 डिग्री हो, देखिए थीटा इज 90 डिग्री, सो साइन 90 डिग्री इज 1 हियर. So and that is pi, that is 22/7. R is 10 into 10 into that is 90 divided by 360 minus 1/2. Radius is 10 into 10 and sine theta is equal to 90. So that is 1. On calculating, I think you have to calculate yourself. And on calculating this, that will be 28.5 centimeter square. So D is the correct option here. इसको कैलकुलेट करिए, सिंप्लीफाई करिए और आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर. Consider the following frequency distribution table and then the lower limit of the median classes. Class interval is given. First of all, you have to see that this class interval is not continuous. 0 to 5, then 6 to 11. मीडियन और मोड के लिए हमें क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा फॉर द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास और मॉडल क्लास. तो पहले देखिए इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं हम यहाँ पे. So the cumulative frequency is here is cumulative frequency 13 as it is. 13 plus 10, 23,
23 plus 15, 38. 38 plus 8, 46 and 11, 57. सो देखिए n हमारे पास है 57, n बाई 2 होगा 57/2, दैट इज 28.5। 28.5 जब हम सर्च करेंगे तो हमें मिलता है ये 28.5 यहाँ पे, और इसका जो लोअर लिमिट है 12 है, लेकिन वी विल हैव टू मेक इट पॉजिटिव, ये कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस के बनाने के लिए क्या करते हैं इसमें के अंदर कि लोअर लिमिट में हम 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 12 माइनस 0.5 दैट इज 11.5। ये लोअर लिमिट 12 है, लेकिन हमें मीडियन के लिए, मीडियन क्लास के लिए हमेशा ही, मोड के लिए हमेशा ही पहले क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूअस बना लेना चाहिए। इसके अंदर हमें 0.5 लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट हमसे पूछा है, तो लोअर लिमिट विल बी 12 माइनस 0.5 दैट इज 11.3। सो सॉरी 11.5, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Two dice are thrown together. The probability that sum of the two numbers will be a multiple of 4 is, देखिए पहले से ही अगर 2 डाई तो हम एक साथ थ्रो करते हैं या एक डाई 2 बार थ्रो करते हैं, तो इसका टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 1 1 2 1 6, 2 1 2 2 6, 3 1 2 3 6, 4 1 2 4 6, 5 1 2 5 6 and 6 1 2 6 6 6। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन टू डाइज आर मींस थ्रोन टुगेदर विल बी 36। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें जो 4 से जो डिविजिबल है, जो 4 का मल्टीपल है, वो फाइंड आउट करेंगे। 4 की टेबल में क्या आएगा, देखिए इसका सम, द क्वेश्चन इज सम, देयरफॉर 1, the sum is 4, 3 and 4, then 2 and 2, this is second, and multiple of 4, देखिए 4 6 plus 2 ये 8 है, 8 भी 4 के टेबल में आता है, and that is also 1 and 3, that is 4, that is also multiple of 4, and 5 plus 3 that is 8, that is also multiple of 4, 4 के टेबल में आएगा, and then 4 and 4, 4 plus 4 8, ये भी 4 के टेबल में आता है, and then 3 plus 5 8, ये भी 4 के टेबल में आता है, और then 2 plus 6 ये भी 4 के टेबल में आता है, और ये भी 4 के टेबल में आता है, 6 and 6 12। अब आप इनको क्या करिए, काउंट करिए कितने हो गए। So you will see here that these numbers are, कितने नंबर हो गए देखिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 out of 36. So probability will be 9 upon 36, that is 1/4 answer. So here D is the correct option. The sum of numerator and denominator of a fraction is 12. Let the numerator be 12x, the denominator will be 12 minus x. दोनों का sum 12 हो जाना चाहिए. And what is given? If the denominator is decreased by 3, numerator is as it is, and now the denominator will be increased, sorry. So 12 minus x plus 3, decrease करेंगे, that will be equal to 1/2. So x upon 15 minus x, that is 1/2. So 2x is equal to 15 minus x. So that is 3x is equal to 15. So x is equal to 5. So now numerator is, therefore numerator is 5. और देखिए इन दोनों का सम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का सम 12 है, तो डिनोमिनेटर विल बी, देयरफॉर डिनोमिनेटर विल बी 7. सो फ्रैक्शन विल बी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज 5/7. सो C is the correct option.
Discriminant of 2x square minus 3x minus 4 will be, we know if the equation quadratic equation है हमारा means ax square plus bx plus c is equal to 0, then discriminant is given by b square minus 4ac. यहाँ पे देखिए b है -3 होल स्क्वायर -4a2 है और ये है -4, तो 9 plus 32, that is 41. So B is the correct option. Discriminant will be 41 for the equation 2x square minus 3x minus 4. In triangle ABC, DE is parallel to BC, it is given. AD is 4x, BD is 3x, AE is 7, and EC is 5x, it is given. And then we have to calculate the value of x. हमें लगता है कि by basic proportionality theorem, AD upon BD is equal to AE upon CE, that is 4x upon 3x, that is 7 upon 5x, x is cancelled by x, so means 4 upon 3 is 7 upon 5x, x is equal to 21 upon 20, that is 1.05. Therefore, B is the correct option. Assertion region-based question. The SCF of two positive integers is 10 and their product is 30,000. Their LCM is, we know that LCM is the product of the two numbers, that is 3,000 upon their SCF, that is 3,000 upon that is 10, that is 300. So देखिए इसका जो ये मीन्स assertion है वो तो ठीक है. Now we go for the SCF of the three numbers A, B, C into LCM of three numbers A, B, C is equal to A into B into C. Student, this formula is not valid for three numbers. This formula is valid for only two numbers. दो ही number के लिए valid है. SCF of two number A and B into LCM of the same two number A and B, that is given by A into B. तो ये जो इसका रीजन है वो करेक्ट नहीं है, ये फॉल्स है, तो दैट इज नॉट करेक्ट. दैट इज व्हाई हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. That the assertion is true but reason is false. So C is the correct option here. Correct answer. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, that is x square minus 2x plus 3, then alpha plus beta plus alpha into beta is 5. We have to check it. देखिए हमें इक्वेशन दे रखा है x square minus 2x plus 3. Sum of zeros is given by means the coefficient of x upon coefficient of x square, that is 2, and product of 0 is given constant term upon coefficient of x square, that is 3 upon 1. Therefore we can say that yes, we can say कि देखिए इसका जो sum of 0 2 दे रखा है, therefore alpha plus beta plus alpha into beta, alpha plus beta is 2 and alpha into beta, that is 3.
So that is 5. It means ये तो फर्स्ट जो इसका मीन्स असर्शन है वो तो ठीक है. ओके. एंड देन सेकंड, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो पहले अल्फा बीटा फाइंड आउट करेंगे. देखिए इसका फैक्टराइज कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 1 can be written as x plus 1 into x minus 1. बोथ फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो देखिए इसका जीरोस होंगे -1 एंड +1. सो एल्फा 1 लेंगे, -1 लेंगे और बीटा -1 ले सकते हैं. अब क्वेश्चन है कि एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका जीरो ट्वाइस ऑफ एल्फा ट्वाइस ऑफ बीटा हो. देखिए ट्वाइस ऑफ एल्फा means 2 into 1 2, twice of beta that is 2 into -1 that is 2. तो इसका क्या इक्वेशन हो गया. देखिए मैं इसको यहाँ पे एक मुझे बोर्ड बनाना पड़ेगा. देखिए तो इस जो इसका इक्वेशन होगा वो हम जानते हैं कैसे बनाते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. एक्स स्क्वायर एज इट इज सम ऑफ जीरो. देखिए सम ऑफ जीरो ट्वाइस ऑफ एल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा 2 -2 दोनों को ऐड करेंगे 0 होगा. 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 2 इंटू -2 सो एक्स स्क्वायर माइनस 4. यस. तो इसका मतलब ये भी ठीक है. रीजन इज ऑल्सो राइट बट the reason R is not explaining the assertion. रीजन से और assertion का कोई लेना देना नहीं है. That is why we can say that both are correct, but both are correct, but both are correct, but the reason is not explaining the assertion. That is why P is the correct option here. So we can mark here the answer as B. Both assertion A and reason are true, but reason is not correct explanation of A. So that's all, student. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.